Hello students, welcome to Super 7 revision series. This is the fourth video in which I am going to tell you about 7 diseases, disorders and treatment based expected questions which can come in cbse exam. This is the first disease from chapter number 12, adenosine deaminase deficiency disease. What is the cause of the disease? It is due to deficiency of an enzyme called adenosine deaminase enzyme, and this enzyme is very crucial for immune system to function. But why the person is not able to make this enzyme? It is due to deletion of a gene which is responsible for making adenosine deaminase enzyme. So it is a genetic disease. What is the treatment of the disease? First, bone marrow transplantation can be done. Second, enzyme replacement therapy can be given, in which functional enzyme or functional ADA is given to the patient. Okay, but by these two methods, we cannot cure the disease. So next line of treatment is gene therapy, and first clinical gene therapy was given in 1990 to a 4-year-old girl. You can see the picture of the girl. Come to the procedure for gene therapy. स्टार्ट करते हैं डायग्राम से. पेशेंट की बॉडी से टी लिम्फोसाइट्स निकाले जाते हैं और उनको ग्रो किया जाता है इन द कल्चर, एंड देन दीज टी सेल्स आर इन्फेक्टेड विद द रेट्रोवायरस which contain functional ADA cDNA. What is cDNA? It is the complementary DNA, which is single-stranded DNA, contain the gene of interest. Okay. Next, आइए. T cells now carry human ADA cDNA. Next, what happens? Now, this T lymphocyte has got the corrected ADA gene. इन lymphocytes को amplify किया जाता है, grow किया जाता है, and then infuse back to the patient body. And now the patient is able to make the enzyme. But there is one problem. Lymphocyte का एक life span होता है. They are not immortal. So, regular infusion of genetically engineered lymphocyte is required. So, is there any permanent treatment? Point number 4 पर आइए. Gene isolated from marrow cells producing ADA. इनको introduce कर दें अगर हम early embryonic stage पर, then it could be a permanent cure. Clear? So, question है आपके सामने. Mention the cause and the body system affected by ADA deficiency. Cause है deletion of the gene coding for adenosine deaminase, and system affected is immune system. Name the vector used for transferring ADA DNA. It is a retroviral vector. और recipient cells कौन से हैं? Lymphocytes. Come to next. Chapter number 8 से लिया है Acquired Immunodeficiency Syndrome. AIDS. What is this? It is a deficiency of immune system which is acquired during lifetime. And what do you mean by the syndrome? Syndrome means a group of symptoms. So एक person के अंदर बहुत सारे symptoms दिखाई देने शुरू हो जाते हैं. Okay, this is called syndrome. And the case was first reported in 1981. Cause क्या है इसका? HIV, Human Immunodeficiency Virus, और ये retrovirus का member है, which is having RNA as a genome. How it is transmitted? It is transmitted by sexual contact, transfusion of contaminated blood, use of infected needles, and from infected mother to a child. But remember, it is not transmitted by mere physical contact. Okay? जब ये वायरस बॉडी में एंटर करते हैं तो सबसे पहले ये अटैक करते हैं मैक्रोफेजेस को. नाउ सी द हाउ दे मल्टीप्लाई. पॉइंट नंबर 1 पर आइए. डायग्राम पर रिट्रोवायरस है, आउटर कोट प्रोटीन का है और अंदर वायरल आरएनए कोर है. जब ये अटैक कर रहा है मैक्रोफेज सेल को, व्हाट हैपेंस? पॉइंट नंबर 2 पर आइए. वायरल आरएनए इज इंट्रोड्यूस इनटू द सेल. देन दिस वायरल आरएनए विल फॉर्म वायरल डीएनए in the presence of enzyme reverse transcriptase. Point number 3. Come to point number 4. This viral DNA will now incorporated into the host genome. Point number 5. अब ये infected cell क्या बनाएगा? This infected cell will make new viral RNA. And point number 6 पर आइए. New viruses are produced. These new viruses will now infect other cells. कौन से cells को ये affect करेंगे? They will infect other macrophages and also T lymphocytes. Clear? Next, macrophages now act like a HIV factory. बहुत सारे नंबर में HIV बनने स्टार्ट हो जाते हैं.
and these HIV now enter into helper T lymphocyte और वहाँ ये replicate करते हैं और प्रोजेनी वायरस बनाते हैं. These viruses further attack other helper T lymphocyte. What will happen? There is a decrease in number of T lymphocyte in the infected person. Immunity कम होने लगती है. As a result, person start suffering from fever, diarrhea, weight loss, etc. So symptoms start appearing. तो जब HIV वायरस ने अटैक किया था और जब सिम्टम अपेयर हुआ, कितना टाइम लगता है? इट मे टेक फ्यू मंथ्स और मैनी ईयर्स ऑल्सो, 5 to 10 years टू अपेयर फर्स्ट सिम्टम. इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक हो गया है पर्सन का. What will happen next? Due to decrease of immunity, many infections can attack the person. Like mycobacterium जो tuberculosis cause करता है. Many viruses can attack. Fungus, parasites like toxoplasma can attack the person. Now, what is the treatment of the disease? Antiretroviral drugs are given to the person. But by this, we can just increase the life of the person, but we cannot cure the disease. How can we identify the disease? Test क्या है इसका? ELISA, enzyme linked immune solvent assay. Okay. Now do the question. Question number 2 आपके सामने है. A, B, C, D, E से linked question है ये. Write the chemical nature of coat A. It is protein coat. Name the enzyme B. It is reverse transcriptase. And what is C? It is the viral DNA. Now, mention the name of the host cell D. The HIV attack first when it entered into the human body, macrophages. Name the 2 different cells the new viruses E subsequently attack, macrophages and helper T cells. Okay. Now, एक और क्वेश्चन देखिए. इम्यून सिस्टम पर्सन का बहुत कम हो चुका है. एलाइजा टेस्ट पॉजिटिव है. नेम द डिजीज द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम. एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. राइट द फुल नेम ऑफ द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म. ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. नेक्स्ट डिजीज इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 8, मलेरिया कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ इज प्लाज्मोडियम. यहाँ पर 3 स्पीशीज प्रोटोजोआ की दिखाई गई हैं प्लाज्मोडियम की. प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम. आउट ऑफ दीज 3, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम is the most serious one and it may be the fatal also. How this plasmodium enter into the human body? डायग्राम देखिए यहाँ पर. पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है एंड सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो कंटेन स्पोरोजोइड विच इज द इन्फेक्टेड स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम. जब फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो बाइट करता है तो स्पोरोजोइड को ब्लड में छोड़ देता है. Now what will happen next? Sporozoid reach liver through blood. In the liver, the parasite reproduce asexually in the liver. और जब ये सेल burst होते हैं, these parasite come out from the liver cells into the blood. And then they attack RBC. Point number 3. यहाँ पर क्या करेंगे ये? Parasite reproduce asexually in RBC. और जब RBC burst होंगे, rupture होंगे, a toxic called hemozoin is released and cause fever. बट थोड़ी देर के बाद फीवर अपने आप उतर जाता है क्योंकि ये पैरासाइट फिर से न्यू आरबीसी में एंटर कर जाते हैं. ओके. अब दोबारा कब फीवर अपीयर होगा? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में 48 आवर्स के बाद फीवर अपीयर होता है. प्लाज्मोडियम मलेरिया में 72 आवर्स के बाद रीअपीयर होता है फीवर. बट इन प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम इट मे अपीयर डेली. ओके. After this, come to the sexual phase of life cycle of Plasmodium. Gametocytes develop in the RBC in human body. Okay. When the mosquito bite this infected person, what will happen? Female Anopheles mosquito takes up gametocytes with blood meal, and these gametocytes will reach to the gut of the mosquito. Intestine में पहुंच जाते हैं. Point number 6 पर आइए. Okay. यहाँ पर क्या होगा? मेल और फीमेल गेमेटोसाइट हैं, फर्टिलाइजेशन होगा एंड दे स्टार्ट डेवलपिंग. डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा एंड दे डेवलप इनटू द स्पोरोजोइड विच इज द इन्फेक्टेड स्टेज एंड दे एस्केप फ्रॉम द गट एंड माइग्रेट टू सेलाइवरी ग्लैंड्स. पॉइंट नंबर 7 पर आइए. ओके. सेलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर स्पोरोजोइड्स अब प्रेजेंट हैं. नाउ द मॉस्किटो इज रेडी टू इन्फेक्ट द अदर पर्सन. ओके. सो 2 होस्ट हैं यहाँ पर, मॉस्किटो है और ह्यूमन बींग्स हैं. ओके.
ह्यूमन बींग्स के अंदर एसेक्सुअल मेथड होता है और मॉस्किटो के अंदर सेक्सुअल फेज ऑफ लाइफ साइकिल होता है प्लाज्मोडियम का। क्लियर? सो क्वेश्चन है आपके सामने, ABC के से लिंक्ड क्वेश्चन है। ए, mention the role of A in the life cycle of malarial parasite. A is female Anopheles mosquito and it is a vector which transmits sporozoid infected stage to the healthy person. And also the sexual phase of life cycle is completed in female Anopheles mosquito. Name the event C. It is the fertilization, and the organ where this event occur, it is the intestinal wall of the mosquito. Identify the organ B. It is the salivary gland. Name the cells being released from it, sporozoids. और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5. Trace the route of sporozoid of plasmodium when it enters the human body till its entry into RBC. The answer देखिए, into human blood. From there it goes to the liver cells. Then from liver cells it comes back to the blood and then it attacks the red blood cells. Question number 6. Name the host and the site for the formation of gametocytes. Host is human beings and site is in the erythrocyte. Fusion of gametocytes. Host is mosquito and site is in the intestine. Next, from chapter number 5, chromosomal disorders. As you know that in all human beings, in all cells, we have got 46 chromosomes, means 23 pairs. If there is an addition or subtraction of chromosome takes place, this will lead to disorders called as chromosomal disorders. First chromosomal disorder है Down syndrome, जिसको सबसे पहले एक्सप्लेन किया था लैंगडॉन डाउन ने in 1866. ओके, इस चाइल्ड में क्या होगा, 47 क्रोमोसोम होंगे इंस्टेड ऑफ 46 क्रोमोसोम. कौन सा क्रोमोसोम एडिशनल होगा? एडिशनल 21st क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, सो इट इज कॉल्ड एज ट्राइसोमी ऑफ 21. यहां देख सकते हो डायग्राम में आप 21 के 3 क्रोमोसोम हैं. सो टोटल 47 क्रोमोसोम है इस चाइल्ड में. क्या फीचर्स होंगे डाउन सिंड्रोम के? शॉर्ट स्टेचर्ड, स्मॉल राउंड हेड, फरोड टंग, partially opened mouth, palm with palm crease. You can see the diagram, you can see the picture. बहुत specific palm crease होती है. Okay. Retarded physical, psychomotor and mental development. और Down syndrome is seen both in male and female child. Okay. Next is Klinefelter syndrome. यहाँ पर भी एक additional chromosome है, 47 chromosome है. ये male child है, normally होना चाहिए XY, but additional copy of X is present. So क्या जीनोटाइप हो गया? XXY. फीचर्स देखिए, ओवरऑल मैस्कुलाइन होगा, मेल चाइल्ड होगा, बट डेवलप्ड फेमिनाइन कैरेक्टर लाइक ब्रेस्ट डेवलपमेंट विच इज कॉल्ड एज गायनेकोमेस्टिया. नेक्स्ट इज टर्नर सिंड्रोम. यहाँ पर 45 क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम कम है, ये फीमेल चाइल्ड है. तो कौन सा क्रोमोसोम कम है यहाँ पर? देयर इज एन एब्सेंस ऑफ 1 X क्रोमोसोम. Only 1 X chromosome is present, so genotype is XO or X0. Such females are sterile, they cannot reproduce. Rudimentary ovaries होती हैं and they lack secondary sexual character. Now, do the question. Question number 7, ये टेबल फॉर्म में है. क्वेश्चन नंबर 1 डाउन सिंड्रोम से रिलेटेड है. यहाँ पर आपको बताना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अफेक्टेड इंडिविजुअल. एनी वन कैरेक्टर यू कैन राइट. ब्रॉड पाम विथ पाम क्रीज, पार्शली ओपन माउथ, furrowed tongue, anything you can write here. सेक्स कैसा होगा? बोथ मेल एंड फीमेल. सेकेंड पर आइए, XXY कॉज है, तो सिंड्रोम क्या होगा? क्लाइनफेल्टर. और सेक्स क्या होगा? मेल. थर्ड इज टर्नर सिंड्रोम. यहां पर आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिखने हैं. 1 स्टेराइल फीमेल विद रूडिमेंट्री ओवरीज. 2 लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर. और सेक्स कैसा होगा? फीमेल. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. Thank you very much for staying with me. Subscribe the channel to get the information about my new video. So अब disease related question आप अच्छे से attempt कीजिए and get good marks in your board exam. Thank you so much.